हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स का थ्योरी समझने में जो डिफिकल्टी होता है उसे दूर करेंगे, न्यूमेरिकल कैसे इजीली सॉल्व करेंगे उसे बताएंगे। टुडे आई विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट। आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एसी वोल्टेज, एसी करंट, रिलेटेड पैरामीटर्स लाइक टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू। वी लर्न टू कैलकुलेट एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। सो चैनल पे जुड़े रहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, पढ़ने और सीखने में मजा आ जाएगा। ठीक है। सो अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेस आर एसी इन नेचर because AC has many advantages over DC. AC source means alternating voltage source or alternating current source. ठीक है। AC source means alternating voltage source or alternating current source. When this AC supply is seen in an oscilloscope, it looks like a sine wave. The sine wave is as shown in the figure. So this is the continuous sine wave. ठीक है। So after certain interval of time or after certain time, this curve is repeating. See here, this is started at 0 and one cycle completed after time t. So from 0 to t, one cycle, from t to 2t, second cycle, from 2t to 3t, third cycle, and so on. So this after certain fixed time, this shape of waveform is repeating. See here, from 0 to capital T. So after t second, this curve is again repeating. ठीक है। So this curve is regular shape and continuous. Here t is the time and it is an independent quantity. This is the time and it is the independent quantity. It is taken along x-axis. ठीक है। And ft, this ft is the instantaneous value. It is dependent quantity. This quantity depends on this quantity. ठीक है। So it is taken along y-axis. This alternating voltage can be expressed as a sine function of t or cosine function of t. When it is expressed in sine function of t, then V is equal to Vm sin omega t. ठीक है। When it is expressed in cosine function of t, V is equal to Vm cos omega t. So now we take V is equal to Vm sin omega t and we will consider for one cycle, that is first cycle. This is the AC voltage source, that is alternating voltage. So we are considering for one cycle. So it is for this one cycle or first cycle, this is the starting point and this is the ending point. ठीक है। So when the alternating voltage is seen in an oscilloscope, it looks like a sine wave as shown in the figure. So some important terms we'll learn now. ठीक है। The voltage which is taken along y-axis is called instantaneous value of the AC voltage because the magnitude and direction of this voltage is changing continuously. Because the voltage which is taken along y-axis, the magnitude and direction continuously changing with time. So it is called instantaneous voltage. In this curve, this is the maximum value of the voltage. It is represented in Vm. So the maximum value of the AC voltage is also known as peak value of the AC voltage. ठीक है। Sometimes it is also called as amplitude of the AC voltage. ठीक है। Now capital T is called time period. So
the time period can be defined as the time taken by AC to complete one complete oscillation. ठीक है. Now small f, it is called frequency of the AC supply. In India, the frequency of AC supply is 50 Hz, but in European country the frequency is 60 Hz. So frequency can be defined as number of complete cycle of oscillation in 1 second. ठीक है. Just now we learned that f is the number of complete cycle in 1 second. That means f number of frequency in 1 second. So one number of frequency will be 1 by f second. ठीक है. But one cycle of oscillation takes t second. हमको पता है one cycle of oscillation takes t second. Therefore, t is equal to 1 by f. This is the relation between time period and frequency of oscillation. That is, t is equal to 1 by f. Now, omega is equal to angular frequency. So, angular frequency is the product of number of oscillation per second and angle covered for one complete oscillation. So number of frequency per second हम सबको पता है, that is f, and the curve complete one complete oscillation in 2 pi. So f into 2 pi, that is 2 pi f. Therefore omega is equal to 2 pi f. So this is the relation between angular frequency and frequency. ठीक है. So हमको पता है t is equal to 1 by f. Therefore f is equal to 1 by t. So omega will be 2 pi by t. So क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको पता चलेगा omega t is equal to 2 pi. The instantaneous value of voltage or current is not a standard value because it is always changing its magnitude and direction. ठीक है. Instantaneous value is not a standard value. To measure the voltage or current in AC, two standard values are used. They are called average value and RMS value. So first we learn how to calculate average value of the AC voltage. ठीक है. The average value is also called as mean value. And the average value of AC voltage for one complete cycle is 0. See here, this is the AC voltage curve. This curve is drawn for one cycle. This is positive half cycle. This is negative half cycle. This positive half cycle takes place in time 0 to t by 2. And this negative half cycle takes place in a time t by 2 to t. So both the curve at positive half cycle and negative half cycle are identical and regular in shape. ठीक है. Therefore, the average value of AC voltage for one complete cycle is 0. अभी इसका डेरिवेशन देखेंगे. सो डेरिवेशन फॉर फुल साइकिल. सो दिस इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी हैव कंसिडर्ड हियर फॉर वन साइकिल. ठीक है. सो V is equal to Vm sin omega t. So average value is equal to 1 by t integration of 0 to t f of t dt. This is the formula for calculation of average value. अभी के लिए फॉर्मूला को याद रखो. इसका नेक्स्ट लेक्चर में कैसे हुआ उसको बताएंगे. सो हम लोग अभी निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ दी वोल्टेज. ठीक है. सो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज V average is equal to 1 by t integration of 0 to t V of dt. So V is Vm sin omega t. So putting V in place of Vm sin omega t,
that is equal to 1 by t integration 0 to t Vm sin omega t dt. Vm constant है, इसको बाहर ले लो. Then V average will be Vm by t integration 0 to t sin omega 2 dt. So हमको पता है कि integration of sin t is minus cos t, but here sin omega t is so minus cos omega t, and derivative of omega t is omega, so in integration में divide होता है. Therefore Vm by t of minus cos omega t by omega लिमिट 0 to t. यहाँ अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है. ठीक है. सो अभी ओमेगा को बाहर ले लेंगे, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे, देन विल गेट v average is equal to minus vm by omega t. Now in place of small t put upper limit, that is capital T, then it will become cos omega t. In place of small t put lower limit, then it will become cos 0. So minus vm by omega t of cos omega t minus cos 0. हम सबको पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है. सो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई. सो इन प्लेस ऑफ ओमेगा टी पुट 2 पाई. सो माइनस वी एम बाय ओमेगा टी कॉस इन प्लेस ऑफ ओमेगा टी विल पुट 2 पाई माइनस कॉस 0. हम सबको पता है कॉस 0 1 होता है एंड कॉस 2 पाई 1 होता है. सो in place of cos 2 pi put 1, in place of cos 0 put 1. So minus Vm by 2 pi into 1 minus 1, that is 0. So V average is equal to 0 for one complete cycle. ठीक है. Okay. So average value of alternating voltage for complete cycle, that is for one cycle, is 0. अभी हम लोग निकालेंगे average value for half cycle. हम लोग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल का निकालेंगे, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल का निकालेंगे. ठीक है. सो सी इन दिस फिगर, दिस इज द कर्व फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. ठीक है. दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल अकर्स फॉर टाइम 0 to t by 2. ठीक है. एंड दिस t, द टाइम इज टेकन along x axis and the instantaneous value of the voltage is taken along y axis. ठीक है. सो दिस कर्व, दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल कर्व occurs for a period of t by 2. That means t by 2 minus 0, that is t by 2. And this curve occurs for time 0 to t by 2. So average value of the voltage V average is equal to 1 by t by 2 integration of 0 to t by 2 v dt. So this t by 2 can be written as 2 by t integration 0 to t by 2 Vm sin omega t dt. In place of v we'll write Vm sin omega t. Vm constant है, इसको बाहर ले लो, then it will becomes 2 Vm by t integration 0 to t by t sin omega t dt. ठीक है. हम सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sin omega t माइनस cos omega t by ओमेगा. सो अभी ओमेगा माइनस को बाहर ले लो, देन विल गेट V average इक्वल टू माइनस 2 Vm बाय ओमेगा टी ऑफ cos ओमेगा टी इन लिमिट 0 to t by 2. t by 2 अपर लिमिट है, 0 लोअर लिमिट है. ठीक है. सो पुटिंग द लिमिट्स, नाउ V average इक्वल टू माइनस 2 Vm बाय ओमेगा टी cos ओमेगा टी by 2. इन प्लेस ऑफ स्मॉल t पुट t by 2. Minus in place of t put 0 cos 0 omega into 0 0. Since omega is equal to 2 pi by t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमको मिलेगा ओमेगा t is equal to 2 pi. So in place of omega t put 2 pi. Therefore V average is equal to minus 2 Vm by 2 pi. In place of omega t I put 2 pi, so it becomes 2 pi. Cos, here also omega t, in place of omega t I put 2 pi, so 2 pi by 2 minus cos 0. 2 cancel, so minus Vm by pi. हम सबको पता है cos pi minus 1 होता है, cos 0 1 होता है. So this is minus 1 minus of 1.
So minus 1, minus 2. So after simplification here, we get average, V average is equal to 2 Vm by pi. So V average is equal to 2 Vm by pi. 2 by pi करने से हम लोग को मिलेगा 0.637. सो V एवरेज इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स ऑफ Vm. इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने से होगा 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है. देयरफॉर इफ वी मल्टीप्लाई 100 देन विल गेट V एवरेज इज इक्वल टू 63.7% ऑफ Vm. देयरफॉर V एवरेज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज प्लस 0.637 टाइम्स ऑफ Vm. ठीक है. Similarly, for negative half cycle, V average will be minus of 0.637 of Vm. ठीक है. For positive half cycle, positive value. For negative half cycle, negative value. Similarly, we can calculate average value of the current. ठीक है. So, I average will be 2 Im by pi. Simply interchange. In place of V average, write I average. In place of Vm, write Im. Then we will get the answer. ठीक है. ओके. अभी हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज. ठीक है. सो द RMS वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव वैल्यू. समटाइम्स इट इज कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू. टू कैलकुलेट द RMS वैल्यू we are using the formula RMS value is equal to square root of 1 by t integration of 0 to t f of t square into dt. ये फॉर्मूला कैसे हुआ उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे. अभी के लिए फॉर्मूला को याद करो. ठीक है. we'll calculate RMS value for one complete cycle. So this is the full cycle. ठीक है. So V is equal to Vm sin omega t. Here is this V is the instantaneous value of the voltage. ठीक है. So put f of t is equal to V, that is equal to Vm sin omega t. So RMS value of the voltage, that is V RMS is equal to square root of 1 by t integration of 0 to t V square dt. ठीक है. That is square root of 1 by t integration 0 to t V square means Vm sin omega t का होल स्क्वायर, दैट इज Vm स्क्वायर sin स्क्वायर omega t dt. ठीक है. Vm स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो. सो स्क्वायर रूट ऑफ Vm स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू t sin स्क्वायर ओमेगा t dt. sin स्क्वायर ओमेगा t फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए इसको अदर फॉर्म में चेंज करो. हम सबको पता है cos 2t इज इक्वल टू cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t. फिर इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर t वी कैन राइट 1 माइनस sin स्क्वायर t बिकॉज sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1. सो cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर t. सो 1 माइनस sin स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t. सो इंटरचेंजिंग 2 sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2t. सो sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2t बाई 2. सो इन प्लेस ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t राइट 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2. ठीक है. सो राइटिंग विल गेट RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Vm स्क्वायर बाई 2t इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt. बिकॉज हियर सी स्क्वायर रूट ऑफ Vm स्क्वायर बाई t इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2. दिस 1 by 2 here divided by 2, this is constant, so we'll take outside. Then it will become Vm square by 2t integration 0 to t 1 minus cos 2 omega t dt. ठीक है. See here now. So integration of 1 into dt is t. So t integration of cos 2 omega t dt is sin 2 omega t by 2 omega. ठीक है. बिकॉज हम सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos t is sin t, but it is not cos t, here cos 2t. So derivative of 2 omega t is 2 omega. So इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय 2 ओमेगा होगा. ठीक है. सो लिमिट 0 टू t, दैट इज रूट ओवर ऑफ
Vm square by 2t into, now in place of small t put upper limit, that is capital T. So capital T minus, here also in place of t put capital T upper limit t, minus now put lower limit, in place of t put 0 प्लस in place of t put 0. हम सबको पता है साइन 0 0 होता है, इसलिए ये टर्म 0 हो गया. दिस इज ऑलरेडी 0, सो दिस इज 0. So in place of omega t we can put 2 pi, so it will become 2 into 2 pi. So 4 pi, so sine of 4 pi is 0, so this term also 0. So all these three terms, these are 0, so only remaining is capital T. So square root of Vm square by 2t into t cancel, therefore root over of Vm square is Vm, root over of 2 is root 2. So average value of alternating voltage is Vm by root 2. therefore हम लोग इसका वैल्यू 1 by root 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो होगा 0.707 Vm. सो Vrms इज इक्वल टू 0.707 Vm. ठीक है, इसको परसेंटेज में एक्सप्लेन करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो Vm इज इक्वल टू 70.7% ऑफ Vm. ठीक है, सो RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज. सिमिलरली RMS वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हैं, दैट इज IRMS इज इक्वल टू Im by root 2. In place of Vrms, write RMS. In place of Vm, write Im. Then we'll get IRMS is equal to Im by root 2. That is 0.707 times of Im. इसको परसेंटेज में एक्सप्लेन करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई होगा. इफ यू मल्टीप्लाई विथ 100 देन इट विल बिकम 70.7% ऑफ Im, नॉट Vm, Im. ठीक है, ओके. मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मेरा चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.